गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी ये मेंस आंसर राइटिंग की क्लास होगी। मैं हमारी जो पिछली क्लासेस थी उसमें मैंने आपको कुछ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको लिखवाए थे, जो ऑलरेडी जो है हमारा जो यूपीएससी जो है वो ऑलरेडी पूछ चुकी है हमसे। तो जो बच्चे डायरेक्ट ये क्लास देख रहे हैं तो पहले मैं क्वेश्चंस जो है वो लिखवा देता हूँ आपको, और उसके बाद आप जो है इसको वीडियो को पॉज करके अपने जो आंसर जो है उनको फ्रेम कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है वो मैं इसके आंसर जो है वो आपको डिक्टेट करवा दूँगा। तो पहला है आपका, पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज हेल्ड इन द कोहिलो केस, व्हाट वाज हेल्ड इन द कोहिलो केस इन दिस कॉन्टेक्स्ट can you say that the judicial review is of key importance amongst the basic features of the constitution, 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, analyze the distinguishing feature of the notion of right to equality in the constitution of USA and India 2021 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट लिखो, examine the scope of fundamental rights in the light of the latest judgment of Supreme Court on right to privacy। लास्ट क्वेश्चन लिखो, राइट टू प्राइवेसी वाला क्वेश्चन जो है 2017 का है, और उससे पिछला जो था राइट टू इक्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड इंडिया, ये था आपका 2021 का। नेक्स्ट लिखो, ये पिछले साल ही पूछा गया 2022 में। लिखो, राइट ऑफ मूवमेंट एंड residence throughout the territory of India are freely available to Indian citizens, but these rights are not absolute. Comment, full stop। 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो बच्चे हो बिल्कुल पहली बार जो है जो आंसर लिख रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर लिखो, और उसके बाद जो है अपना आंसर जो है वो मैच कर लेना कि किस तरीके से आपका आंसर जो है वो लिखना चाहिए था, ठीक है। तो अब मैं आंसर लिखवाने जा रहा हूँ। जो सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था कोहिलो केस वाला, ठीक है। तो उसका आंसर लिखो, कोहिलो केस इज one of the landmark judgments in the interpretation of the doctrine of basic structure of constitution as laid in केशव नंदा भारती केस। फुल स्टॉप। आगे दो सब पॉइंट्स बनाओ। पहला लिखो, इन दिस केस a 9-member bench of Supreme Court held that ninth schedule items are not immune to judicial review as it is part of the constitution, full stop। further comma, nothing in ninth schedule can abrogate fundamental rights as they form
as they form basic structure of the constitution. Basic structure of the constitution. Full stop. Second point, the objective behind article 31b, objective behind article 31b of the constitution is to remove difficulties, and not to wipe out judicial review per se. Full stop. Therefore, every amendment to the constitution, including amendment to the ninth schedule, has to be in accordance to basic structure doctrine. Full stop. Next, the judicial review. अब ये अलग से हेडिंग बना रहे हैं हम, ठीक है, ये हेडिंग है नेक्स्ट. द जुडिशियल रिव्यू इज ऑफ की इंपॉर्टेंस among the basic structure of constitution, as कॉलन डाल दो, एज के बाद लिखो फर्स्ट पॉइंट, जुडिशियल रिव्यू is an effective means to protect the fundamental rights of citizens from legislative oversight. Full stop. Second point, it is used to protect the primacy of constitution against the breach of power by legislature and executive. Full stop. Third point, judicial review attains primary importance as it subjects all legislations to close scrutiny adhering to the doctrine of basic structure which includes judicial review itself. Full stop. Next point, without judicial review, comma, basic structure would be rendered rendered powerless and open to violation by arbitrary or draconian laws. Draconian laws. Full stop. Next point, judicial review is an effective tool for safeguarding the constitution which becomes extremely necessary
extremely necessary, keeping in mind the bad experiences of emergency, full stop. अब लिखो इसका conclusion. Therefore judicial review is a crucial aspect and cornerstone of our constitutional setup, full stop. However, necessary care should be taken to ensure that judicial review doesn't lead to judicial overreach, which is harmful for a democratic setup, like India. अब लिखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन है आपका, एनालाइज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ नोशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ यूएसए एंड इंडिया. ठीक है, तो इसका आंसर लिखो. इंट्रोडक्शन बनाओ पहले. both the United States and India are largest democratic countries in the world, based on federalism, in their political structure, full stop. Democracy can only thrive and flourish where the individuals in society are treated equally and without discrimination, full stop. Thus it was necessary to incorporate provisions in the constitution to remove the hurdle hurdle of existing social and economic inequalities, and enable the diverse communities to enjoy the rights and liberties guaranteed under the Constitution. Guaranteed under the Constitution. GURANTEED. Guaranteed under the Constitution. Full stop. Para change karo. The right to equality means the absence of legal discriminations on the grounds of caste, race, religion, sex, and place of birth, and ensures equal rights to all citizens. Full stop. Next point. अब bullet point में लिखो right to equality in India. और इसको अंडरलाइन करो, साथ में डालो कॉलन. right to equality in India. इसमें लिखो in India chapter 3 named as fundamental rights was added in the constitution by constituent assembly. Full stop. The constitution follows both the British model
both the British model of equality before law and American model इक्वालिटी बिफोर लॉ को कॉलन में डालो और इक्वालिटी बिफोर लॉ के नीचे अंडरलाइन लगाओ, एंड अमेरिकन मॉडल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को कॉलन में डालो और अंडरलाइन लगाओ, ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल 14 फुल स्टॉप. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर बोथ सिविल लीगल ऐसे लिखो, सिविल माइनस लीगल एंड सॉरी एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी. हाइफन डाल के लिखना सोशियो इकोनॉमिक और हाइफन डाल के ही लिखना सिविल लीगल एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, फुल स्टॉप. इट ऑल्सो हाईलाइट्स सब्सटेंसिव इक्वालिटी, full stop. The constitution also provides for affirmative action to ensure equality. affirmative के spelling लिख लो AFFIRMATIVE, affirmative action to ensure equality, ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल 16, full stop. It focuses on ensuring equality of outcomes. Along with equality of opportunity. Full stop. The right also prevents discrimination. And abolishes untouchability. ब्रैकेट में लिख लो आर्टिकल 17. ठीक है, तो ये सारा राइट टू इक्वालिटी इंडिया में जो प्रोवाइड करवाया जाता है ये उसके बारे में लिखवाया मैंने. अब लिखो राइट टू इक्वालिटी इन यूएस. सेकंड पॉइंट बनाओ राइट टू इक्वालिटी इन यूएस. इसको भी बोल्ड में लिखो, उसमें क्या कहते हैं अंडरलाइन करो और इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, देन कॉलन डालो. इसमें लिखो the original constitution did not prevent discrimination. Full stop. The US derived right to equality. From Declaration of Rights and Bill of Rights. The US derived right to equality from Declaration of Rights and Bill of Rights. Full stop. It was inserted in the Bill of Rights. Through 14th Amendment. In the year 1868. Full stop. The US follows the concept of equal protection of law. इसको equal protection of law को नीचे अंडरलाइन लगाओ, इसको कोट्स में लिखो. Equal protection of law, which highlights the equal treatment under equal circumstances. Full stop. The right majorly emphasis on civil and legal equality. Full stop. अब लिखो इसका conclusion. The right to equality
Right to equality is considered a basic feature of both the constitutions and play a key role in achieving social and economic justice in our society where upliftment of certain classes is considered necessary for our country to flourish. Full stop. The emphasis is on the fundamental unity of individuals by providing equal opportunities and treatment to all. Third question है आपका, examine to scope the fundamental rights in the light of the latest judgment of Supreme Court on right to privacy. 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसमें लिखो, in recent judgment, intro लिखो पहले, in recent judgment, constitutional bench of the Supreme Court has expanded the scope of fundamental rights and further by ruling that right to privacy is intrinsic to intrinsic to right to life and personal liberty under Article 21 and is inherently protected under various fundamental rights enshrined under Part-III of the Indian Constitution. Part-III of the Indian Constitution. Full stop. Next अपना वो बनाओ, heading बनाओ. The judgment will amplify the scope of fundamental rights. The judgment will amplify the scope of fundamental rights in the following ways. सबसे पहला पॉइंट बनाओ, बुलेट पॉइंट्स बनाना. पहला पॉइंट, the concept of privacy is embedded in the right to liberty slash dignity and that everything done in the exercise of freedom could be attributed to attributed to privacy. Full stop. Therefore different kinds of freedom guaranteed under Article 19 will also get amplified and all the legislative acts
and all the legislative acts and executive actions will have to meet the rigors of RIGOURS, rigors of right to privacy, full stop. Second point, second bullet point लिखो, similarly comma, right to equality under article 14 can only be exercised through liberty and freedom of choice, full stop. Next point, sexual orientation is a part of right to privacy, and thus the judgment may cast doubts over the legality of section 377 of the IPC, full stop. It may open up a new era of liberty for homosexual individuals. It may open up a new era of liberty for homosexual individuals and acceptance of same-sex marriage in India. Full stop. Last point, three elements are considered as the core to the right of privacy. कॉलन डालो, कॉलन. सबसे पहले लिखो पर्सनल एटोनॉमी, कॉमा, द फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, तीसरा, and the right to determine what happens with information about oneself. Full stop. It will question the Aadhaar scheme being enforced by the government to avail different kinds of public services. Full stop. Although the constitutional validity of the Aadhaar scheme is yet to be decided by the constitutional bench of the Supreme Court. Full stop. Conclusion लिखो. However, it should not be forgotten that no fundamental right is absolute. Are absolute in India. Rights कर लेना. No fundamental rights are absolute in India, and therefore right to privacy will also be guided by the same. Full stop. Different limitations have been imposed by the Constitution itself. Different limitations has been imposed by the Constitution itself on the exercise of fundamental rights. Full stop. Thus,
Thus, right to privacy will be tested on case to case basis, full stop. However, comma, the judgment of Supreme Court will open a new path for securing the privacy, comma, liberty, comma, equality and dignified life for a common man, full stop. It will also be helpful in creating a robust legal framework for privacy in India. Last question था आपका, right to movement and residence throughout the territory of India are freely available to Indian citizens, but these rights are not absolute. Comment. ठीक है, ये 2022 में पूछा गया था आपसे, इसके बारे में लिखो, इंट्रो लिखो सबसे पहले. The right to movement and residence throughout the territory of India is one of the most important fundamental rights available to citizens of India. Full stop. Para change. Article 19 clause 1 clause D. Article 19 clause 1 subclause D of Indian Constitution entitles Article 19 clause 1 subclause D of Indian Constitution entitles every citizen to move freely throughout the territory of country. Full stop. Moreover, comma, it is available only to the citizens and to shareholders of a company but not to foreigners or legal entities like companies or corporations etc. Full stop. Para change. Freedom of movement has two dimensions. पहली लिखो internal और external. Internal and external, इसको underline कर लो. Internal and external. Full stop. Next point नहीं, उसी में आ गई. Article 19 clause 1 subclause D. Article 19 clause 1 subclause D protects only the internal dimensions. That is, right to move within the country. Full stop. Restrictions on this freedom can only be imposed on two grounds which are mentioned in Article 19 clause 5 of the Constitution itself, comma, namely, फिर से comma, the interest of the public and the protection of interests of
interest of the public and the protection of interest of any scheduled tribe. Any scheduled tribe. Full stop. Para change. Article 19 clause 1 clause E. Article 19 clause 1 clause E provides the right to reside. Provides the right to reside and settle in any part of territory of India. Territory of India. Right to reside and settle in any part of territory of India को कोर्ट्स में लिखो. Article 19 clause 1 subclause E provides the right to reside to settle in any part of the territory of India to the Indian citizens. Indian citizens. Full stop. Just like Article 19 clause 1 subclause D. Just like Article 19 clause 1 clause D subclause D, comma, this right is also subject to reasonable restrictions. Reasonable restrictions. Full stop. Para change. However, these rights are not absolute. Full stop. For example, for protecting the interest of scheduled tribes in India, comma, various provisions have been enshrined. Enshrined in the 5th and 6th schedule of Indian Constitution. In the 5th and 6th schedule of Indian Constitution. Full stop. Some of these deals with limitation or prohibition. Some of these deal with the limitation and prohibition of the transfer of land in such areas. Some of these deal with limitation or prohibition of transfer of land in such areas, as well as the regulation of the allotment of land. Full stop. Para change. Further, comma, in the state of Uttar Pradesh. Further, comma, in the state of Uttar Pradesh versus Kaushalya. Kaushaliya. Kaushalya, 1963, comma, the Supreme Court held that right of movement of prostitutes may be restricted on the grounds of public health and in the interest of public morals. Full stop. Thus full stop. पैरा चेंज. अब कंक्लूजन लिख रहे हैं हम. ठीक है. पैरा चेंज कंक्लूजन. Thus, comma, this right, comma, while enhancing the mobility of the Indian citizens, comma, is also subject to certain restrictions that help in maintaining a fine balance between freedom and rights of the people. ठीक है. तो आज की जो हमारी क्लास थी ये यहीं तक थी, और
अब से जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है डीपीएसपी जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके आगे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद अमेंडमेंट प्रोसीजर उसको डिस्कस करेंगे। तो वो जो आगे की क्लासेस जो है वो आपको एज इट इज ही मिल जाएगी, ठीक है। और उसके नोट जो है वो मैं आपको ऑलरेडी जो क्लास से पहले जो है उसके नोट जो है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। और उसके साथ साथ जब मैं नोट सेंड करूं तो जो मैंने आपको जो आर्टिकल सेंड किए ना उसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो डीपीएसपीज में जो मैं आपको आर्टिकल वाइज जो डीपीएसपी सारे जो है वो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक चीजें जो है जो पता होनी चाहिए वो ये है कि कौन सा जो आर्टिकल जो है वो कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कौन सा जो आर्टिकल है वो सोशलिस्टिक टेंडेंसीज रखता है, कौन सा आर्टिकल जो है वो लिबरल टेंडेंसीज जो है वो रखता है। बस इन्हीं 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वो जो है मैं आपको क्लास में समझा दूंगा कि कौन से गांधीयन प्रिंसिपल है, कौन से सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, कौन से लिबरल प्रिंसिपल है, ठीक है। तो बस आपको आर्टिकल्स जो है वो याद नहीं करने हैं, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल है वो आपको आर्टिकल बाय आर्टिकल वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो जो मैं साथ साथ आपको बताता रहता हूँ वो आपको आर्टिकल वाइज वो चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। लेकिन डीपीएसपीज के आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक याद कर लेना यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो कौन सा आर्टिकल होता है, आई थिंक आर्टिकल 43 या 44 होगा, ठीक है। तो वो बस उसको आपको याद करना है कि वो वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला जो आर्टिकल है वो आपको बाई नंबर जो है वो इकलौता डीपीएसपी जो है वो याद करना है, ठीक है। और उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है क्योंकि रिसेंटली न्यूज में भी है तो मैंने जो अपने नोट्स जो आपको सेंड करूंगा उसपे जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर मैंने अलग से नोट बनाया हुआ है, तो वो नोट आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जो बच्चे इस साल जो अगर कोई बच्चा मेंस दे रहा है या अभी जब ये पीपीएससी अपना एग्जाम निकालती है तो उसका जो मेंस होगा उसमें काफी ज्यादा चांसेस है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आपको मेंस में सवाल पूछ लिया जाए। उसके अलावा 2 चीजें जो है वो मैंने आपको और भेजनी है जब मैं आपको अमेंडमेंट करवाऊंगा, क्योंकि अभी तक मैंने सारी जो अमेंडमेंट्स जो है वो आपको नहीं भेजी है, ठीक है। तो मेरे पास एक नोट बना हुआ है जिसमें सारी अमेंडमेंट जो है वो नोट जो है वो आपको आपकी जो लक्ष्मीकांत वाली बुक है उसके बैक साइड पे भी मिल जाएगा, उसमें सारी अमेंडमेंट जो है वो दी हुई है, ठीक है। तो जो अमेंडमेंट मैं आपको बताता जाता हूँ या जो अमेंडमेंट हम क्लास में कवर कर रहे हैं, ठीक है, वो उस अमेंडमेंट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उस अमेंडमेंट में क्या क्या बातें हुई, अमेंडमेंट का नंबर कौन सा था, अमेंडमेंट का ईयर कौन सा था, ठीक है। ये बातें। और उसके अलावा एक नोट जो है वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, वो मैं आपको स्पेशली अलग से भेजूंगा। मैंने जो है अपना आर्टिकल वाइज, ठीक है, आर्टिकल्स और उसके सामने जो अमेंडमेंट हुई है, जिस अमेंडमेंट से जो आर्टिकल ऐड किया गया है या जिस आर्टिकल से रिलेटेड कोई ना कोई अमेंडमेंट हुई है, तो वो सारा मैंने जो है 67 पेजेस का जो है वो डॉक्यूमेंट है, तो वो सारा चार्ट जो है वो मैंने रेडी किया हुआ है। तो उसमें आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल किस चीज की बात करता है, अमेंडमेंट जो है अमेंडमेंट किस चीज की बात करती है और उसके अगेंस्ट अगर कोई जजमेंट आई है तो उस जजमेंट में क्या बात की गई थी, वो सारा जो है 5-6 कॉलम्स का जो है एक टेबल जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें सारे आर्टिकल्स आर्टिकल 1 to लेके जितने भी आपके हैं 395 आर्टिकल्स, तो वो सारे जो है उसमें वो जो टेबल जो है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो वो जो नोट्स जो है वो मैं आपको तब सेंड करूंगा जब मैं आपको करवाऊंगा अमेंडमेंट, ठीक है। तो अमेंडमेंट के साथ ये दोनों नोट जो है ये मैंने आपको सेंड करने हैं। उसके अलावा जितने भी अमेंडमेंट्स जो आती हैं ये मीनवाइल वैसे जो जितनी अब तक हमने कर ली है वो सारी मैंने लिखवाई है जो अब तक के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। जैसे वो आर्टिकल आपके पास वो डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाता है तो आपको जो अमेंडमेंट्स हमने कर लिया उनके ऊपर स्टार मार्क कर लेना है, क्योंकि वो अमेंडमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो उनके बारे में क्या क्या चीजें जो पता होनी चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि एक तो अमेंडमेंट का नंबर, दूसरा उसका ईयर, तीसरा उसमें क्या बातें की गई, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो है इनके ऊपर प्री में क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है, और उसके अलावा इन अमेंडमेंट्स को जब आप अपना मेंस का आंसर लिखते हो तो उसमें वहां पे भी आप इन अमेंडमेंट्स को जो है वो कोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है जब हमारा डीपीएसपीस और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज एंड देन उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वो जब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तब ये नोट जो है ये दोनों नोट्स जो है ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको प्रिंट करा के अपने पास रख लेना, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।